So we have learned so far lens equation, lens makers formula. তার মানে এইটা শিখেছিলাম দেখো, one by f equals to mu minus 1 into 1 by r1. I would prefer writing this capital minus 1 by r2. What is what here? If we get a lens, suppose if we draw a lens, then the radius of curvature of the first surface where light strikes from this side, suppose light is coming from this side. So this has a radius of curvature r1, and this side, the second surface, has a radius of curvature r2. Mu is given by, remember, mu of the lens, mu of the lens divided by mu of the medium. What we referred as. With this idea, let us move forward. Suppose a lens is placed in air, both sides air. Okay, it has a focal length fa. Okay, the next case is, suppose here is a lens. Now this is immersed in water. This lens is immersed in water. That means there is water outside, and water has a Ri mu water 4 by 3. Now the same lens, that means the radius of curvature R1 here and R2 there remains same, R1 and R2, because those are the curvatures made of glass. Glass cannot change its curvature if it is immersed in water. So R1, R2 remains same. What is the formula for the lens being placed in air? 1 by f air, mu. Now mu here, I'll come to mu later. Mu minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. Here, what is the change? 1 by f water, mu would be something different, say mu dash, minus 1. R1 and R2 remains the same. R1 minus 1 by R2. R1 and R2 remain the same. R1 and R2. So, if we consider the ratio of these two, ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो ऑफ these two. तो रेशियो ऐसा हो जाएगा, suppose this is equation 1 and this is equation 2. So, if we consider the ratio, equation 2 divided by equation 1. What do we get? Equation 2 by equation 1. So it becomes 1 by f water divided by 1 by f air. Okay. राइट साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो, राइट साइड बाय राइट साइड, 1 by r1 minus 1 by r2 तो कैंसिल हो जाएगी. So equation 2 by equation 1, it will become mu dash minus 1 by mu minus 1. Okay. Now carrying this forward, we get, implies that mu f air goes up and f water here. And this ratio mu dash, what is the meaning of mu? Mu means, just now I have told you, mu means, very good. Mu means mu of the lens by mu of the surrounding medium. That is whatever mu is. So mu dash, let us come here, mu dash. Here, mu dash would be given by mu lens, okay? Mu lens means, suppose mu glass. Lens is glass, made of glass, suppose. So mu glass 1.5 divided by mu medium, that is mu water. Now mu water is given by 4 by 3. So what is the ratio? Mu glass, mu lens by mu water, mu medium.
This is mu dash. So mu dash gives us this value. 1.5 means 3 by 2 divided by 4 by 3. So it is 9 by 8. Clear? Mu glass by mu water. And here, let us find mu also here. Mu means mu lens, that is again 1.5, divided by mu surroundings or mu medium, that is 1, because surrounding is air. So it remains 3 by 2. 1.5 by 1 and 1.5, that is 3 by 2. And here 9 by 8. Now let us put these values here. Mu dash minus 1. Mu dash was 9 by 8. And mu minus 1, that is 3 by 2. 9 by 8 minus 1, that is 1 by 8, divided by 3 by 2 minus 1, that is half. So, 1 by 4. That means F water becomes 4 times F air. You can say this to be a numerical. You can say this to be a basic subjective question answer, that whenever a lens is placed or dipped inside water, its focal length becomes 4 times in water. But don't be happy. This is not a good news. Why? If focal length becomes 4 times, then power, I have told you power is given by 100 by focal length. Focal length being in centimeter unit. Centimeter unit. 100 by F. So if focal length becomes 4 times, we can understand that power and focal length are inversely proportional. So power of a lens in water, not air, in water becomes 1 by 4 times the power of the same lens in air. That means power decreases. Power, दूर तक देखने का power, our vision. Suppose if we immerse our eyes, which are lenses, inside a swimming pool, so the power of our eyes reduces to 1/4 the original value. That means we cannot see much long distance inside water because our power of the eye lenses becomes 1 by 4 times. Not for eye lenses, because for any glass lens, because it will become 4 times focal length and power will become 1/4 only for the calculation we have done, and where we have taken that lens is having glass of mu 1.5, but our eye lenses will not have this mu 1.5. So it will not exactly become 4 times focal length or power 1/4 times, because these are not made of glass. So anyway, if this is glass lens and if it is immersed in water, what is the shortcut? If it comes as a short question MCQ, we will answer that okay, its focal length will become 4 times and the power becomes 1/4 of the power in air. Okay. Next part. Dekho, let us do one this sum. A lens has radius of curvature of one side 10 centimeter and radius of curvature on the other side 20 centimeter. Okay. Find its focal length small f. यही क्वेश्चन है. और लेंस कैसा है? कन्वेक्स. This is the picture of the lens. Question number 1. This is the solution part. Solution क्या है? We know, और अगर मालूम नहीं रहेगा लिखना we don't know, पर लिख के आना. तो लिखो 1 by f equals to mu minus 1. Its mu is now given mu glass 1.5. So mu minus 1 into, then I have written the format part.
1/r1 माइनस 1/r2। देखो अब ऐसे अगर करेंगे 1/10 r1 माने 1/r2 1/20, आंसर गलत आएगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली गोइंग थ्रू अ फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंडिंग दैट। गलत हो जाएगा ये। यहां से अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे ना 1/r1 माने 1/10 और 1/r2 माने 1/20, so the focal length that you get will be different from the original one. How? Let us understand that. Because R1 and R2, the values that you know should be accompanied with some signs. कभी बुक में देखना R1 प्लस दे दिया, कभी R2 प्लस, कभी R1 माइनस, कभी R2 प्लस, कभी R1 प्लस R2 माइनस। ये कैसे हो जाता पता नहीं, दे जस्ट राइट इट। टेक्निक सुनो क्या करना है, वो सब नहीं करना है। लाइट का डायरेक्शन ऑपोजिट, कहां ये लाइट का डायरेक्शन ऑपोजिट? इफ नो पिक्चर इज गिवन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो शॉर्टकट देखो, और शॉर्टकट यहां से शुरू होता है। शॉर्टकट मतलब क्या है? कंसेप्ट पार्ट, आई मीन टू से। चलो, कंसेप्ट पार्ट ऑफ द लेंस इज लाइक दिस। आई एम राइटिंग हियर लेंस। ओके, द लेंस कैन बी ईदर कन्वेक्स और concave, or these two types of lenses. I am writing their names as well as drawing their pictures. Number one, this is the picture. This is what? Write biconvex. Biconvex means both sides are convex, but one side has a radius of curvature r1, the other side r2. And here the first point of the concave is biconcave. Biconcave means the lens which has both sides concave, but one side radius of curvature r1, the other side it is r2. For this, write 1/f equals to, after giving a little space, mu minus 1, 1/r1 plus 1/r2, और यहाँ पे लिखो 1/f, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, लिखो mu minus 1, 1/r1 plus 1/r2। ये क्या हो गया? अभी लिखे थे लास्ट पेज में 1/r1 माइनस 1/r2, फॉर्मूला ये था, और उसको ऊपर बेस करके बना भी डाले साम। ये क्या था? ये मे बी इसका लास्ट पेज में इतना अच्छा करके लिखा हुआ है ये। व्हाट अबाउट दिस? नाउ आई एम सेइंग यू राइट दिस थिंग। ऐसे लिखो, आइडिया बता रहा हूं। You need not to think of the signs of this f, r1, r2, कब क्या प्लस माइनस, कुछ नहीं, कभी नहीं, बैठाना नहीं है। तो only one thing. In the last class I had told you that a convex lens has a focal length positive or negative. सिर्फ ये बता दो, convex lens का focal length प्लस होता है कि माइनस? Convex lens in general positive. And concave lens always has a focal length negative. Based on that, क्योंकि ये convex lens का पार्ट है, ये होगा प्लस। क्योंकि ये concave lens का पार्ट है, ये होगा माइनस। That's it. बाकी ये ऐसा ही होगा। सेकेंड फॉर्मूला, इसमें लिखो ये बाई कन्वेक्स था, अब लिखो इक्वी कन्वेक्स। इक्वी कन्वेक्स विल मीन R1 R2 तो है, बट दे आर इक्वल। जितना इस साइड का रेडियस R1 उतना उस साइड का रेडियस R2, माना रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोथ आर इक्वल। दैट काइंड ऑफ लेंस इज कॉल्ड इक्वी कन्वेक्स लेंस। एंड इसका पिक्चर वैसे ही होगा, जस्ट ऐसा ही होगा। R1 और R2 दोनों ही कितना है? R. For this, the formula of focal length 1/f is given by
म्यू माइनस 1 2/r, और यहां पे लिखो नंबर 2 इक्वी कनकेव, ये मेरा ई है, डोंट माइंड इट, इक्वी कनकेव, इक्वी कनकेव लेंस जो होगा उसमें क्या होगा कि R1 इक्वल्स टू R2, इसका भी कितना होगा, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R ले लिए, तो इसका फोकल लेंथ 1/f, थोड़ा सा जगह छोड़ना, म्यू माइनस 1 लिख दिए 2/r। नाउ आई कैनॉट अंडरस्टैंड कि ये 2/r कहाँ से आ जा रहा है, बिकॉज R1 और R2 इक्वल है, और बिकॉज यही फॉर्मूला होगा उसके लिए भी, यही होगा यहाँ पे, सिर्फ R1 और R2 दोनों ही R हो जाएगा, सो इट वुड बिकम 1/r प्लस 1/r, मिलकर कितना हो जाएगा 2/r, और ये प्लस माइनस कुछ नहीं करना, सिर्फ सामने जो जगह छोड़ने के लिए बोले थे वहां पे प्लस लिख देना, बिकॉज कन्वेक्स लेंस मस्ट हैव फोकल लेंथ पॉजिटिव, चलो सामने प्लस लिखो, और यहाँ पे ये तो कनकेव है तो उसके लिए साइन कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लिखना, सिर्फ सामने माइनस। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, चलो द थर्ड वन इज हाफ कॉन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, यस, चलो यस, दिस इज कॉल्ड थर्ड वन प्लेनो कन्वेक्स। Plano convex. Now let me tell you, anything that is plane, flat, has radius infinite. इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा, मोर रेडियस, मोर रेडियस, मोर रेडियस, मतलब ये एक बहुत बड़ा सर्कल का पार्ट है ये, दैट मीन्स इट्स रेडियस इज मोर। तो फ्लैट जो हो गया वो कैसा सर्कल का पार्ट है, फ्लैट जो हो गया, जो फ्लैट हो गया वो इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस का एक पार्ट है, फ्लैट सरफेस, दैट मीन्स अ फ्लैट सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू इंफिनिटी, ये इसका माने है। सो एनी टाइम यू सी समथिंग फ्लैट, तो क्या करेंगे, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी बोल देंगे। तो बताओ कि द पिक्चर दैट यू कैन सी हियर, ये जो पिक्चर है ये देखने में तो डी टाइप का है, पर है ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तो इसका ये प्लेन सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, एंड दिस सरफेस, इसका जो होगा होगा उसी को R बोलेंगे, सो R2 वुड बी गिवन बाय R। So now the formula that we have been learning, I mean the special part that we have to apply, 1/f will be equal to म्यू माइनस 1, सामने थोड़ा जगह छोड़ दिए, 1/r1 प्लस 1/r2 gives us म्यू माइनस 1, सामने तो प्लस होगा क्योंकि कन्वेक्स है, ओनली 1/r, यस, हाँ, 1/infinity will become 0. Similar manner में if we find the plano concave lens, this side is again will have infinite radius of curvature, and this side will have something R. So here also we will write the same formula, 1/f equals to, थोड़ा सा जगह छोड़ना, म्यू माइनस 1 1/r, फॉर सेम रीजन, सिर्फ जगह क्यों छोड़े हैं यहाँ पे, माइनस साइन। तो क्या फॉर्मूला बार बार सेम आ रहा है, सिर्फ प्लस माइनस हो रहा है, यस दैट इज इट इज। तो क्या हम लोगों को कभी भी R1 R2 का साइन बैठाना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो एनी सम कर लो, शॉर्टकट है ये, लॉजिक प्लस शॉर्टकट। लॉजिक क्या है इसमें, ये ऐसे लॉजिक कहाँ हुआ है, ये तो सिर्फ अब तो सिर्फ बोल दिए कि इसको ऐसा करो, हम लोग कर लिए, इसको प्लस करने बोले हम कर लिए प्लस, और बोले कन्वेक्स के लिए प्लस, सामने प्लस दे दो, कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, सामने माइनस दे दो, तो इसमें लॉजिक कहाँ आया, लॉजिक है ना। अगर ये लेंस है, अगर ये लेंस है, मैं तो रफली ऐसे ड्रॉ कर लिया, चलो अब ठीक से ड्रॉ करता हूँ ये रफली ड्रॉ किया था, सपोज दिस इज अ लेंस, so this part of the lens, only one part,
is the part of a sphere. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन है? R1. सिमिलरली सपोज मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, सपोज दिस इज द अदर साइड ऑफ द लेंस. नाउ दिस साइड ऑफ द लेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनदर स्फीयर. सो इसका रेडियस कितना होगा? से R2. This is the first surface on which light is appearing. Suppose light यहाँ से आ रहा है, light coming from here, object ऐसा है. So light अगर ऐसे आ रहा है light, so it hits this surface first. That's why इसका नाम दिए थे 1. और ये surface second हो गया, उसके लिए इसका नाम दिए थे 2. R1 1 by F mu minus 1 1 by R1 minus 1 by R2. As you know, the rule of direction, यहाँ पे ये अगर मैं हटा दूं, R1 R2 का ये हटा देना, R1 और R2 का. R1 माने ये सरफेस 1 का रेडियस. ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय ऑन अ कर्व सरफेस, हाँ है. उसका मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल. क्या एनी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल? यस. सो ये पोल से इसका सेंटर तक का दूरी जो होगी ये, दिस इज इट्स रेडियस R1. तो इसका जो रेडियस R1 होगा फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट कर्व सरफेस. इसका डायरेक्शन क्या इधर होगा? हाँ होगा. तो ये डायरेक्शन क्या लाइट का डायरेक्शन में आ रहा है? यस. सो क्या R1 प्लस हो जाएगा? यस. सो R1 प्लस. फॉर सेम रीजन सेकेंड सरफेस ये है, दिस इज द सेकेंड सरफेस. क्या ये सरफेस का मिडिल पॉइंट को पोल बोलेंगे? हाँ बोलेंगे. इसको P2 नाम दे दिए. सो इसका रेडियस कैसे मिलेगा? फ्रॉम पोल टू इट्स सेंटर. सो इट्स पोल टू इट्स सेंटर. इधर आएंगे तो क्या इसको R2 बोलेंगे? क्या इस टाइम R2 नेगेटिव होगा? यस, क्योंकि लाइट जिधर आ रहा है उसका ऑपोजिट से आ रहा है. तो क्या मैं R2 का सामने माइनस बैठा दूं? बैठा दीजिए. कौन रोक रहा है? मेरे हाथ में पेन है, बैठा दिया. नहीं, लॉजिक है. तो नाउ टेल मी व्हाट डज द फॉर्मूला बिकम? यही फॉर्मूला हो गया ना. ये है लॉजिक. फिजिक्स में लॉजिक के बिना तो चलेंगे नहीं. पर क्या होता है ना, कभी कभी लॉजिक मजा से ज्यादा सजा हो जाता है, इसलिए उसको कभी कभी छोड़ देते हैं ना. आज की रिमेंबर दिस. फॉर सेम रीजन ये भी वैसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा. सो आइडिया क्या सिखाना चाहता हूं? कन्वेक्स हो चाहे कनकेव, फॉर्मूला क्या याद करना है? जैसे पिछला बार लिखा था मैं, वैसे एक ब्रीफ छोटा सा. ये होगा जनरल फॉर्मूला. अभी से हम लोग अगर सब भूल जाएंगे कम से कम इसको याद रखेंगे. क्या? म्यू माइनस 1 और 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ये कब करेंगे? व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल. और जब थ्योरी करेंगे तब वो बैठा देना बुक वाला 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. बट पुटिंग साइंस इनटू कंसिडरेशंस, सम जब बनाओगे तब इसी को यूज करना. 1 by F equals to 1 by R1 plus 1 by R2. And the only change that you need to make, reading the question, that is, ये लेंस क्या कन्वेक्स है कि कनकेव? इफ इट इज कन्वेक्स पुट प्लस साइन, कनकेव माइनस. एंड दीज आर नथिंग बट स्पेशल केसेस. कैसे? यहीं से देख लो ना, यहीं से. कनकेव होने से वही माइनस 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 होगा, कन्वेक्स होने से प्लस 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 होगा. फॉर्मूला यही है. अब अगर दोनों साइड इक्वली कन्वेक्स है तो R1 और R2 इक्वल है. सो 1 बाय R प्लस 1 बाय R 2 बाय R. अगर एक साइड फ्लैट हो गया वो क्यों? इंफिनिटी. एंड 1 बाय इंफिनिटी बिकम 0. तो सिर्फ 1 बाय R बचेगा. तो नाउ लेट अस गो थ्रू द फॉर्मूलास व्हिच आर स्पेशल वंस. सेकंड वन देख लो एक बार कि वेदर आई हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट. सेकंड वन अंडरस्टूड दिस और नॉट. डिफर्स बाय अ साइन ओनली. थर्ड वन प्लेनो, एक गया था एक बचा था, तो 1 बाय R. इसका भी 1 बाय R. डिफर्स बाय ओनली साइन. कन्वेक्स प्लस कनकेव माइनस. दैट्स इट. यू गॉट इट. नाउ अब कहां जाएंगे? कहीं जाना नहीं है, घर में रहो. सिर्फ
इसको देखो, इसको छोड़ के आए थे इसको, एंड आई हैड टोल्ड यू दैट यू वुड बी रॉन्ग इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला फ्रॉम द बुक कि म्यू माइनस 1 by r1 minus 1 by r2, r1 and r2 आर गिवन एंड म्यू इज गिवन। तो क्या होगा, राइट क्या होगा फिर, राइट होगा भाई कन्वेक्स है ना कनकेव, पिक्चर बता रहा है कि ये कन्वेक्स है, और पिक्चर ये भी बता रहा है कि कन्वेक्स होने से ये प्लस होगा शुरू में। एंड सेकेंड थिंग, फॉर न्यूमेरिकल नेवर यूज दिस माइनस प्लस। अब होगा सम कैसे, 1.5 minus 1 half, 1 by 20 माने 1 by 10 plus 1 by 20, 3 by 20. 3 by 20, so it would be 3 by 40 altogether. So f would be given by 40 by 3, plus na minus plus, that is the answer. This is the answer. Idea 1 clear, idea 1 clear हुआ, idea 2 चलो आगे बढ़ते हैं, I will not stop here. The idea is इसको ड्रॉ करो, we are going to do a theory now. ये थ्योरी में क्या है, this is a lens and this is another lens. This is another lens, दोनों टच किया हुआ है. This is the principal axis. बहुत ही मोटा हो गया ये खा खा के, अब ठीक है. So this is another lens. अब हो क्या रहा है कि suppose a ray of light, मैं उसको ऐसे ले लेता हूं, comes from P point. एक लाइट को तो सीधा निकाल दो ऐसे, इसका भी सेंटर माने ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा विदाउट डेविएशन, सीधा चला जाएगा. एक लाइट ले लो जो कि ऑब्लिक इल्यूमिनेशन करेगा, लेंस का बीच में कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है. सो जस्ट रिफ्रैक्ट इट आफ्टर द लेंस. कैसे भाई, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस, सो इट विल ट्राई टू कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट और अ रे ऑफ लाइट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो ये टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया, और ऐसे ही ये आता रहा एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ ऐसा? बिकॉज उससे पहले एक दूसरा लेंस आ गया, एंड दैट लेंस विल नॉट अलाउ द रे ऑफ लाइट टू मूव एज स्ट्रेट लाइन. क्यों? बिकॉज दिस लेंस विल अगेन हैव सम इफेक्ट ऑन द पाथ ऑफ दिस रे. तो ये सेकेंड लेंस होके जब ये निकलेगा, तब ये सेकेंड लेंस फिर से इसका इफेक्ट डालेगा. दैट मीन्स द सेकेंड लेंस बीइंग अगेन अनदर कन्वेक्स लेंस विल फर्दर कन्वर्ज द रेज. कन्वर्जिंग लेंस है ना, इट विल कन्वर्ज द रेज डाउनवर्ड्स, माने टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. सो द फाइनल रे विल मीट समवेयर ओवर हियर. With our prior knowledge, we understand that this is an image that should have been formed but didn't form. Why? Because another lens came into the picture. So this image is called intermediate image. Intermediate image. Say I1. But for the second lens, that intermediate image will act as an object for the second final image at the second lens. तो second lens के लिए यही अब ऑब्जेक्ट है. कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट. और उसका फाइनल इमेज यहां पे हुआ. लेट अस कॉल फाइनल इमेज टू बी आई, और यहां पे लिख दे रहा हूं मैं फाइनल इमेज. Intermediate image माने it was going to be an image, but due to the refraction of the second lens it turned further. So this is the image provided we do not consider the second lens. যদি second lens না থাকতো তাহলে this could have been the image. That's why that is called intermediate image. আর
this image acts as an object for this, so its final image forms here. So any image that was going to form but didn't form due to further refractions are all called intermediate images. And where the light finally forms the image, that is the image actually. For what? For a system of lenses. That's why, so this is the final image. Now there is another thing. In our syllabus, we are having only this thing. Thin lenses. So in case of thin lenses, this thickness of the pink or the first lens, 0. Thickness of this motu lens, 0. Why? Because actually they are very thin. Only for the sake of drawing, I have drawn them this thick. But they are very thin lenses. So for thin lenses, that is in our syllabus. That's why whatever distance measured of anything from the first lens will be the distance from the second lens also. Because देख लो ये मेरा हाथ है, मान लो बहुत ही पतला है और ये भी बहुत ही पतला है. So anything, suppose मेरे हाथ से 20 मीटर दूरी पे है. So distance from this face 20 meter. From this face, second face, वो भी 20 meter ही है. Why? Because this thickness is very small, patla. That is this lens and this lens. तो thin lenses के लिए क्या होगा सुनो. Mark this distance from the first lens as U, object distance. And this is the image distance, the image formed due to the first lens. This is image distance. V1. Why? Because it would have been the image if the second lens was not there. दूसरा lens नहीं रहने से ये image होता. That's why V1, not final image. Now, for the second lens, what will happen for the second lens? For the second lens, this acts as an object. So, for the second lens, this is the object distance. So, this would be object distance. And how much this distance is? Greater than V1 or less than V1 or equal to V1? बोलो तो ये object distance कितना होगा? Greater than V1, less than V1 ना कि equal to V1? So less than V1. Less than V1, but we will consider it. Sir, thin lens. Yes, that is the idea. Less than V1 दिख रहा है भाई कितना less है? इतना less. तो ये कितना है? 0. क्यों? Because the thickness of these lenses are very small. That's why ESF distance को neglect कर देंगे. हाँ, actually you are right. It is less than V1. But as the thickness of the lenses are very small, let us neglect these distances. Okay. So after that, last thing क्या है? The last thing, that is the final image distance. इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ. Last thing is the final image distance. Final image बना कहाँ पे? ये I. This is our image that has practically taken place. So this final image is at a distance V. ये है V. This is V. Now, can we say from this picture, देखो तो कि if we paste two lenses together, ऐसे दो पतला पतला लेंस को पेस्टिंग कर दिए. अब लेंस का पेस्टिंग होता है क्या? होता है ना? कहाँ पे? We have not seen anywhere लेंस का पेस्टिंग. ठीक है, पर have you seen lenses being pasted for say 30 lenses pasted together? 30 lenses ऐसा. You have seen it. You have touched it. कहाँ पे? Microscope in your lab. 30 to 40 lenses are pasted together to make a single lens of your microscope objective lens. Eyepiece का भी होता है. समझ रहे हो? उसलिए lenses are very thin here.
सो तो अगर मान लो वहां पे 40 लेंसेस एक साथ पेस्ट करके तुम्हारा माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस बना है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से योर स्लाइड दैट यू आर प्लेसिंग बिलो इट, वो ऑब्जेक्टिव लेंस से मान लो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है, तो देयर आर 40 लेंसेस। तो फर्स्ट लेंस है 10 सेंटीमीटर, लास्ट लेंस से कितना सेंटीमीटर दूरी पे होगा? 10 ही सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज द टोटल कॉम्बिनेशन कंप्राइजेज ऑफ वेरी थिन लेंसेस। तो किसी एक से डिस्टेंस जितना, दूसरा से भी उतना, तीसरा से भी उतना, 40th से भी उतना ही। दैट मीन्स एनी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेंस जितना, सेकेंड लेंस उतना ही, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पिक्टोरिकली इट अपीयर्स डिफरेंट, अलग लग रहा है यहाँ पे, बट दीज आर वेरी वेरी थिन, दैट्स व्हाई इट हैपेंस। एनीवे, सो देख लो ये जो दो लेंसेस है, बोलो तो ये दो लेंसेस का अगर मैं ब्रीफ बना दूं तो ब्रीफ कुछ ऐसा हो रहा है कि देयर आर टू लेंसेस आर देयर, उसका सामने में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हूं? पी पॉइंट, और दोनों मिला के इमेज कहां बना दिया? आई पॉइंट। बस खत्म, यही काम है, यही है। अब बाकी इतना कुछ ये सब लिखा जुका डजंट मैटर। इफ वी कैन थिंक ऑफ अ सिंगल लेंस हियर, सिंगल, एक ही लेंस ले लिए, एंड इफ दैट लेंस डज द सेम थिंग अलोन, तो उसे क्या बोलेंगे? सिल्वेस्टर स्टेलोन? नहीं, उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस। दैट मीन्स इफ सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द लेंसेस, कितना? u, and if this lens forms the image at the same point or the same distance where the combination of two lenses have formed, तब तो इसी को बोलेंगे, ये दोनों का इक्विवेलेंट। कैसे? एक लाइट इसमें भी गिरा एंड दैट फाइनली रिफ्रैक्ट्स हियर। सो यहां पे जो ऑब्जेक्ट था एट अ डिस्टेंस u, that forms image I, एक ही बार में फाइनल इमेज, नो इंटरमीडिएट इमेज, एक ही बार में ऑब्जेक्ट यहां पे, इमेज यहां पे, हो गया फाइनल इमेज। सो इट फॉर्म्स एन इमेज I at the same distance as the combination of two lenses had created। तो अब दोनों का इक्वेशन कंपेयर करके देखता हूं तो क्या आता है? इक्वेशन कंपेयर करके देखता हूं। देखो, इक्वेशन फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? फॉर द कॉम्बिनेशन 1/v, v को मैं v1 लिखा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देखो तो पिक्चर 1 में देखो, ये पिक्चर में देखो, इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ f2। देखो तो कैन यू जस्टिफाई इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 को जस्टिफाई कर सकते हो कैसे? सेकेंड लेंस को मत सोचो अभी, सिर्फ थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट u, इमेज v1, इमेज ये तो अभी भी बनाया नहीं ना फाइनल इमेज, द इमेज कास्ट बाय द फर्स्ट लेंस ओनली। कहां पे होता? ये होता तो ये तो I1 इंटरमीडिएट इमेज एट व्हाट डिस्टेंस? v1 फ्रॉम इट। तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए था? 1/v माने v1 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1। अच्छा, अब सोचो सेकेंड लेंस। फॉर द सेकेंड लेंस दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इंटरमीडिएट इमेज, दैट मीन्स उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? देखो लिखा हुआ है यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है v1 और इमेज डिस्टेंस फाइनली v, ये हुआ इसका फाइनल इमेज डिस्टेंस। दैट मीन्स 1/v माइनस 1/u, u को कितना लिख दिया? v1 इक्वल्स टू 1/f2। दिस इज इक्वेशन 2 हो गया। सो इफ वी ऐड देम, just add them, we get these two cancelled, so we get 1/v minus 1/u equals to 1/f1 plus 1/f2। ये क्या हो गया? ये यही होना चाहिए था। 1/v minus 1/u तो ठीक ठाक आया, राइट साइड में कैसे 1/f1 plus 1/f2 आ गया? वी हैड टू ऐड देम टुगेदर। ठीक है, छोड़ो, मन दुखी मत करो, छोटा मत करो। तो क्या करें? खुश रहो। वाई? बिकॉज दिस इज ओनली डन टू बी हैप्पी। कैसे भाई? इसके लिए क्या इक्वेशन होगा वो देखते हैं। तो ये लेंस का नाम क्या है? इक्विवेलेंट। सो फॉर दिस इक्विवेलेंट लेंस क्या इक्वेशन होना चाहिए? फॉर दिस इक्विवेलेंट लेंस
द इक्वेशन शुड बी, भाई इसका तो सिंपल है, 1 बाई इमेज डिस्टेंस कितना v माइनस 1 बाई इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना u इक्वल्स टू 1 बाई, भाई तुम्हारा f कितना है, वो बोला मैं तो कैपिटल F बन जाऊंगा, जाओ कैपिटल F, बोला चलो मान लेते हैं, तो 1 बाई कैपिटल F, ये इक्वेशन 4। अब क्या करना है, जस्ट कंपेयर करना है। कंपेयर करने से क्या होता है, इन अदर केसेस देन फिजिक्स द अदर साइड ऑफ द रिवर द ग्रास इज ग्रीनर, पर यहां पे क्या होगा, अदर साइड और इस साइड सेम ही होगा फिजिक्स में। कैसे कि देखो, लेफ्ट साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस कंटेन 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, so the right side whatever they contain in the two cases should also be equal. So if we compare the two equations, comparing the two equations we get, ऐसे करके लिखते हैं, therefore 1 by equivalent focal length capital F is 1 by f1 plus 1 by f2। तो अगर जो ऑब्जेक्टिव लेंस का बात कर रहे थे वो माइक्रोस्कोप में, उसमें अगर 40 लेंसेस आर प्लेस्ड टुगेदर, पेस्टेड टुगेदर, तो क्या वो 40 लेंसेस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसे मिलेगी, 1 बाई कैपिटल F इक्वल्स टू 1 बाई f1, 1 बाई f2, 1 बाई f3, 1 बाई डॉट 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 1 बाई f49, f39 प्लस 1 बाई f40, यस, और क्या, सेम थिंग। सो lenses pasted together side by side without keeping any gap between them should have equivalent focal length given by this relation, and this is a theory actually। ये जो थियोरी हुआ इसका ऊपर बेस करके ऐसा कितना बार आया है ये क्वेश्चन, कैसे कि एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस को पेस्टिंग कर दिए एक साथ, पेस्टिंग कर दिए एक साथ, सो दैट, ड्रॉ करो उसको, ड्रॉ करो, so that this convex lens has a focal length 20 centimeter and this concave lens has a focal length 10 centimeter। ठीक, तो two lenses are pasted together as shown in figure। तो क्वेश्चन क्या है, the combination behaves like a single lens which is अब फोकल लेंथ इतना, कन्वेक्स, ऑप्शन 2 फोकल लेंथ उतना, कनकेव, लेट्स सी दैट, 1 बाई कैपिटल F, वी डोंट नो द वैल्यू, इक्वल्स टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, ये सिंपल कैलकुलेशन है, 20, ये कितना दिया 10, सो the combination behaves like a single lens which is, ठीक है, no problem, but you tried it, that's it। Sir, 1 minus 2 2 করেছি। Oh, अच्छा। So anyway, but do not forget to put the sign of the focal length whenever you would be applying the focal length of any lens. Convex lens, I told you several times, has focal length positive. Concave lens, I've told you several times that focal length is negative. So do not put those values without sign. Put the values with sign, so it becomes negative. Now negative focal length दोनों मिला के negative आ रहा है, that means it behaves like a concave lens and
इट्स फोकल लेंथ f इज गिवन बाय 20 सेंटीमीटर. यहाँ पे और साइन देने का जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव रिटन इट हियर. सो दिस इज इट. इसका बताना. नेक्स्ट. They are pasted together. Both have focal length f. What is the equivalent focal length? f ही रहेगा, f/2, 2f, 0, infinity. 5 ऑप्शंस है. फाइव ऑप्शंस. Sir, f/2. f/2. One option I got. f/2. सोच के बोलो. Sir, 0. Okay. So 0 जीतছে. 0 is the winner. Let us see that. So 1 by f equivalent 1 by f plus 1 by f, but one would be positive, another would be negative. So it would be 0. f equivalent. भाई 1 by f 0 आ गया तो कैपिटल F कितना होगा? ये तो 1 by f 0 आया. ঠিক আছে, নো প্রবলেম. এলা মনে থাকবে. হ্যাঁ, সাইনটা অ্যাপ্লাই করো. তো দেখছো তো, প্র্যাকটিস করলে ইউ বিকাম কনফিডেंट. যে আচ্ছা, आई अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है. प्रैक्टिकल मीनिंग ये हो गया कि इफ बोलो. हाँ, ওটার একটা পার্ট কনভার্জেন্ট আর একটা পার্ট ডাইভার্জেন্ট। তো মানে একটা পার্ট যতটা কনভার্জ করবে আর একটা পার্ট ততটাই ডাইভার্জ করবে। yes, that means a parallel beam of light will remain parallel. কোথায়? In rectangular glass slab, but this will also behave similarly. It will also behave similarly. মানে as their focal lengths are equal, focal lengths. अच्छा देखो तो 1 by कैपिटल F इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट पावर, क्योंकि 1 by फोकल लेंथ माने तो पावर इक्वल्स टू 1 by F1 माने P1, 1 by F2 माने तो पावर ऑफ द सेकेंड लेंस. एक का पावर प्लस, एक का पावर माइनस आ रहा है, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 0. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ ग्लास with 0 power? The rays are not going to have any change or difference. The rays will straight pass through them like a parallel glass slab. That's it. That is the meaning of this. Okay.